हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके सामने अब हम लेकर आ रहे हैं IBPS PO 2020 का बैच बाय गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन बाय बैजूस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो IBPS PO 2020 में आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं और आपको यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर कि आप सभी सब्जेक्ट्स, सभी टॉपिक्स, सभी सेक्शंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद नो वीडियोस इन बिटवीन। तो आइए एक नजर डालते हैं IBPS PO 2020 एग्जामिनेशन के फॉर्मेट पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। आप जानते हैं IBPS की वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन आप चाहें तो बैजूस की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर कि आप वेबसाइट से यहां पर नोटिफिकेशन जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसमें आप काफी चीजें देखेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5/8 से 26/8, तो इसका मतलब ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 26/8 2020 इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट। तो समय बहुत कम है, तो जितनी जल्दी हो सके कृपया आप लोग ऑलरेडी इसका फॉर्म भर दें, लास्ट डेट की वेट ना करें। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, वो RRB के लिए एम करना चाह रहे हैं या SBI के लिए एम कर रहे हैं, इसलिए वो IBPS का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और वो ये है कि पहले सेलेक्ट हो जाएं और उसके बाद अगर आप चाहें तो वो आप IBPS का अपना सिलेक्शन छोड़कर अगले किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए चले जाएं। लेकिन एक बार एक प्रोसेस को कंप्लीट तो करें, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि एक पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर में आपने कैसा रैंक किया, इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके नंबर कितने आए, चाहे वो प्री का टेस्ट हो, मेंस का टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आप अगले एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो इसीलिए कभी कभी आपको, अगर बाई चांस आप IBPS PO नहीं बनना चाहते, तब भी कभी कभी आपको कोई टेस्ट इसलिए लेना चाहिए ताकि आप देख सकें कि अगले टेस्ट के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो लास्ट डेट 26/8 आपके लिए, ये डेट आज ही है, समझ लीजिए। बाकी सब डिटेल्स जितनी भी हैं उसमें आप बाकी जितनी भी डेट्स हैं उसका आप जितना भी फोरम है वो एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो 3/10, ये देखिए डेट्स यहां दे रखी है, 3/10, 10/10 और 11/10, ये 3 डेट्स हैं जो आपके सामने हैं। तो पहली डेट 3 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर। तो इनमें से किसी भी दिन आपका ये ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है। तो आप अपने माइंड में प्रिपरेशन लेकर रखें 3/10 की, 3 अक्टूबर की प्रिपरेशन आप लेकर रखें। इसी तरह से मेंस एग्जामिनेशन जो है, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा अगर आप क्लियर करते हैं, एक सेकेंड, तो मेंस एग्जाम तब आप अपेयर कर पाएंगे अगर आपने प्री टेस्ट को क्लियर किया, जो कि 3, 10 और 11 अक्टूबर को है। तो ऑनलाइन मेन एग्जाम की डेट है 28 नवंबर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए आपको यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आपका प्री का एग्जाम खत्म होता है, आपको सीधा ऑप्टिमिस्टिकली, ये पॉजिटिव सोचते हुए कि आपका प्री का एग्जाम क्लियर होगा, आपको इमीडिएटली मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी। बाकी जितने भी डेट्स हैं, अगर तो ये ऐसे हैं तो बहुत अच्छे, अगर पोस्टपोन होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है।
जो कि नोटिफिकेशन में दे रखी है हमारी वेबसाइट पे, और इवन कम्युनिटी में भी आप चले जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा इसी चैनल पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहां पर एग्जाम की। प्री का एग्जाम जो है, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें ये 3 सेक्शन है आपके सामने। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे 30 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक प्रश्न एक अंक का है, 1 मार्क्स। क्वांट या मैथ्स पे 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग पे 35 क्वेश्चंस, और ये एक नंबर के क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कृपया इसे भूलें ना कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहेगी वो 0.25 रहेगी, 1/4 रहेगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होता है, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स ये आपको हिंदी में भी दिखाई देंगे। अब एक चीज का ध्यान रखें कि ये तीनों के तीनों सेक्शंस आपको अलग अलग अटेम्प्ट करने हैं, तो हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का इंडिविजुअल टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 60 मिनट्स का टाइम दिया, आपने 30 मिनट्स मैथ्स में लगाए, 10 मिनट्स रीजनिंग में लगाए, 15 मिनट्स ऐसा इंग्लिश में लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 20 मिनट्स में इंग्लिश का सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। 20 मिनट्स के बाद में इमीडिएटली नेक्स्ट सेक्शन अपेयर होगा, वो 20 मिनट्स के लिए चलेगा, फिर नेक्स्ट सेक्शन अपेयर होगा, वो 20 मिनट्स के लिए चलेगा। तो एग्जैक्ट 20 मिनट्स आपको मिलेंगे यहां पर हर एक सेक्शन के लिए। इस तरह से अगर आप देखें तो 35 क्वेश्चंस के लिए आपको केवल 20 मिनट्स दिए गए हैं। तो अगर आप रफली देखें तो हर एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 35 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स इज व्हाट इज यू आर गेटिंग, क्योंकि आपको आंसर भी तो मार्क करना है, उसमें भी कुछ 2-3 सेकेंड तो जाते ही हैं। ठीक ऐसे ही रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे केवल 20 मिनट्स में। तो इस चीज का ध्यान रखें, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप कितने सजग हैं, आपकी प्रिपरेशन कौन से लेवल की है। स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑब्वियसली किसी भी एग्जामिनेशन का बेसिक क्राइटेरिया होता है आपको क्लियर करने का। तो चलिए यहां पर एक चीज और जो आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट्स बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। और ये कट ऑफ मार्क्स जो हैं ये डिसाइड होगा, IBPS जो है उनका बोर्ड डिसाइड करेगा, और इसका कोई भी स्थायी या फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। कट ऑफ मार्क्स टोटली डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उस वक्त जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके नंबर कितने आए हैं। तो जितने इन्हें लोग चाहिए होते हैं उसके हिसाब से ये एक बॉटम कट ऑफ जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। आपको अमूमन हमेशा 70% टू 75% की कट ऑफ के लिए तैयार रहना है। यूजुअली स्पीकिंग ज्यादातर टेस्ट के अंदर 65% कट ऑफ रहता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन यहां पर इन 100 में से आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपका स्कोर 80+ हो, इससे कम ना हो। तो अगर आपका ये रहेगा तभी भाई आपको मालूम पड़ पाएगा कि आप मेंस के अंदर पक्का जा रहे हैं, और तभी आप इंटरव्यू की तैयारी करके एक सक्सेसफुल PO ऑफिसर बन पाएंगे। चलिए जी, यहां पे दिया ही हुआ है डिसाइडेड बाय IBPS, जितने भी कैंडिडेट्स चाहिए होंगे उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। और अगर मैं अगली स्लाइड पे चलूं तो आपको ये बताते हैं, यहां पर ही बता रहे हैं पहली बात तो कि नेगेटिव मार्किंग इज 0.25, 1/4, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया था। नेक्स्ट, मेन एग्जामिनेशन के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे ही प्री का टेस्ट आपका खत्म होता है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक सेकेंड, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्री का एग्जाम खत्म होते ही आप मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जाम द मोमेंट यू आर डन विद योर प्री टेस्ट। तो जी देखिए, मेंस के एग्जामिनेशन में आपके जो सेक्शंस आएंगे, these are the sections that you have to target. रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों मिलाकर 45 क्वेश्चंस आएंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 60। तो यहां पर अगर आप देखें तो इट वर्क्स आउट टू बी
नियरली 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, और इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। लेकिन यह पक्का नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए और कोई और क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ जाए। तो इसीलिए आप किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ ना जाएं, एंड यू जस्ट टेक द सरफेस लेवल। आप एक बार मोटा मोटा अंडरस्टैंड करें, 45 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट इन 60 मिनट्स। तो जहन में एक सवाल आता है कि रीजनिंग तो भाई प्री टेस्ट में भी पूछा जाएगा, फिर मेंस में भी जो रीजनिंग पूछ रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या होगा? ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल in mains will be much higher and this requires more practice as well। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहले ही दिन से अपने कंसेप्ट्स प्री के टाइम पर क्लियर करें, और जब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो हायर लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। ओके, देन वी हैव जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इस पे देयर आर 40 क्वेश्चंस, 40 marks. Again, English and Hindi both. 35 minutes will be the time allotted. Again, 35 minutes will be the time allotted for general economy, banking awareness kind of questions. Now, general awareness, banking awareness, you know it for sure कि अगर एक question आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। उसमें तुक्के मारने का कोई मतलब नहीं है। If at all you know a question, then please attempt it, otherwise leave it. But in all probability, your preparation should be in such a way कि आप उस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्वियसली द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इन इंग्लिश ओनली, यू कांट हैव बाइलिंगुअल क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। मीडियम ऑलवेज इज इंग्लिश। 40 मिनट्स इज योर व्हाट यू गेट। सो दैट मीन्स 1 मिनट से ज्यादा, मोर देन अ मिनट इज व्हाट यू गेटिंग पर क्वेश्चन। ऑलराइट, डिसेंट इनफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस सबसे आसान होते हैं। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में फिर वही बात है, अगर किसी वर्ड का मतलब आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं, इफ एट ऑल यू कीप ऑन स्टेयरिंग एट अ पर्टिकुलर वर्ड, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन आसमान से बिजली कौंधेगी और उसका जो भी मतलब है, मीनिंग है, वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, सीधी बात। अगले प्रश्न पे जाएं। यू शुड ऑलवेज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Skip the ones which you don't know. Now, very importantly, data analysis and interpretation. Data interpretation. The level of questions are going to be higher. Pre में भी ये questions आते हैं, लेकिन जो level of questions आपको mains में दिखाई देता है, वो काफी high होता है। तो there are again going to be a separate section consisting of 35 questions and it would be 60 marks. So there would be some questions, कुछ questions होंगे जो 2 नंबर के होंगे, कुछ होंगे जो 1 नंबर के ही होंगे। तो इस तरह से करते हुए 60 मार्क्स का ये टोटल बनेगा। टोटल टाइम अलॉटेड इज 45 मिनट्स। नाउ प्लीज नो दैट डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज कैलकुलेशंस। सो द स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस हैज टू बी हायर एज इट इज। अगर आप IPPS PO का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ बैंकर, यू आर एक्सपेक्टेड कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड हैज टू बी रियली फास्ट। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। बहुत पहला ही ये आपका कदम होना चाहिए कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड्स को बहुत तेज रखें, बहुत अच्छा रखें। सो टोटल यू हैव 155 क्वेश्चंस, इनकी वैल्यू है 200 मार्क्स, और टोटल टाइम जो आपको गिवन है वो है 3 आवर्स। और 3 आवर्स में भी आप नोटिस करें, ये 3 आवर्स क्यूमुलेटिव साथ में नहीं मिलेगा, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो विच मीन्स दैट कि यू कैन नॉट अवॉइड अ सेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस सेक्शन में अच्छे नंबर ले आऊंगा और इस सेक्शन में कम मार्क्स ले आऊंगा तो बैलेंस हो जाएगा। नथिंग डूइंग, यू हैव टू बी गुड एट एवरी सेक्शन। ऑलराइट, सो जस्ट ये ध्यान रखें कि कहां पर आप वीक हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छे नंबर अर्जित करवाएगी, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जहां वीक हो वहां ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ज्यादा टाइम डिवोट कीजिएगा। After that, you also have English language, letter writing and essay. There are going to be 2 bits which would be given to you. उसमें choices भी रहेंगी और maximum marks 25 रहेंगे। इसके लिए आपको total 30 minutes allot किए जाएंगे। ये मेंस एग्जामिनेशन का आपका सिलेबस है, पैटर्न है। तो
चलिए बात करते हैं, यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 है, 1/4 है। ये एक आपके सामने पूरा का पूरा करिकुलम है, सिलेबस है जो दिया गया है। इस सिलेबस में प्री और मेंस दोनों के ही टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। बहरहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैथ्स की। आज आपकी पहली क्लास है, इसके बाद जो क्लास होगी वो होगी डायरेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग की क्लास। ये आपकी मैथ्स की पहली क्लास है। इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स में। तो उसमें अभी आपकी ये जो क्लास है, सबसे पहले ये रहेगी स्पीड मैथ्स की, विच विल बी अबाउट दी फास्टर कैलकुलेशंस। आप कैसे अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं भाई, बॉड मास पे है, अप्रॉक्सीमेशंस पे हैं, परसेंटेजेस हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, नंबर सिस्टम, द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दैट यू अटेम्प्ट। उसकी प्रिपरेशन में नंबर सिस्टम जो है उसके जो बेसिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी पे बिल्डअप करके आप अपने दूसरे टॉपिक्स जो हैं उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं। नंबर सीरीज, अराउंड 5 क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली इसमें। इन 5 क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स आपको दिखाई पड़ेगी। नाउ द होल पॉइंट हियर इज, नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन जो है ये तो सबसे आसान होते हैं। आप ये 5 में से 5 नंबर तो अपने पक्के ही समझे। इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, percentages, this is very important. These 3 are very important from the point of view of data interpretation. Data interpretation के अगर माध्यम से भी देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि इसी के बेसिक्स पे आपको कैलकुलेशंस करनी होगी, इन्हीं के अनुसार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जरूर एक क्वेश्चन आता ही है, कई बार 2 आ जाते हैं, कई बार 3 भी आते हैं। बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है ये पेपर सेटर का। पार्टनरशिप, इस पे भी कभी कभी एक सवाल आ जाता है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 टाइप्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑलराइट। तो ये दोनों पे आधारित प्रश्न जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका एक्सटेंशन है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। सो टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, और एक नहीं कई बार 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेसेस। रेसेस के क्वेश्चंस भी टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट पे ही आधारित होते हैं। देन टाइम एंड वर्क, बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, फॉलोड बाय पाइप्स एंड सिस्टम्स विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड वर्क। इसी का एक्सटेंशन, इसी के कंसेप्ट लगेंगे और पाइप्स एंड सिस्टम्स आप बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, फादर्स एज, सन्स एज, रेशियो बिटवीन देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस, ये सभी मिला जुला के प्रॉब्लम्स ऑन एजेस बनती है। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, यूजुअली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें परसेंटेजेस आर इन्वॉल्व्ड, वैल्यूज आर इन्वॉल्व्ड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये एक्सटेंशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस आर सीन यूजुअली, और बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक बिट है जिस पे क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी पे ज्यादातर एक क्वेश्चन देखा ही गया है, कभी कभार परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे भी पूछा गया है। अगर नहीं भी पूछा गया तो भी एक टॉपिक अगर सिलेबस में इंक्लूडेड है तो हमें वो प्रिपेयर करना ही होगा। देन डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चंस जो हैं दे आर पर्टेनिंग टू मैथ्स, दे आर पर्टेनिंग टू रीजनिंग एज वेल, दोनों में होते हैं। तो डेटा सफिशिएंसी में कुछ डेटा आपको दी जाती है एक प्रश्न के लिए, और पूछा जाता है कि 2 डेटा जो आपको दी गई हैं उसमें से एक डेटा सफिशिएंट है या दोनों सफिशिएंट हैं या दोनों सफिशिएंट नहीं है। इस तरह से कुछ चॉइसेस दी जाती हैं जिसके अनुसार आपने आंसर करना होता है। वेल, एज आई टोल्ड यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हियर वुड बी the skill of data interpretation. You have tables, bar graphs, line graphs, pie charts, इनके combinations हो सकते हैं, caselets हो सकते हैं, scatter graph हो सकता है। So अलग अलग types हैं यहाँ पर, और इसमें फिर speed of calculation, जैसा कि मैंने आपको पहले भी indicate किया है, percentages, averages, ratio proportion, normal multiplication और addition की techniques, squares, क्यूब्स,
ये सब आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। देन एज इट इज आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू। सो दिस इन टोटल ये वाला आपका सिलेबस रहेगा जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, और कोर्स आपका 30 सितंबर तक हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज अ क्रैश कोर्स। सो आपको एक ही काम करना है, आपको क्लासेस अटेंड करनी है, उन्हें रिवाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीप ऑन लुकिंग एट द वीडियो, रिवाइंड करें उसको बार बार। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता, कभी कोई डाउट हो तो आप जरूर क्लास के अंदर पूछ सकते हैं। आगे जाके एक उसके लिए समय दिया जाएगा, उस समय अनुसार आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ऑल राइट, सो वी बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट सेशन। सबसे पहला सेशन जिसका अर्थ है, जिसका नाम है स्पीड मैथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पीड। ऑलराइट, और स्पीड मैथ्स का यहां पर सीधा साधा तात्पर्य है दैट वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी नो द ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेटिंग फास्ट। तो जितनी भी कैलकुलेशंस आती हैं उसमें हमें बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करना होता है। सो प्लीज बी श्योर, बी अवेयर कि यहां पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऐसी कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं जैसे 28.56% ऑफ 71,428। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास के अंदर करवाऊंगा भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम करेंगे क्यूब्स पे, स्क्वायर्स पे। पहले मैं आता हूं स्क्वायर्स पे। सो लेट अस टॉक अबाउट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5। ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट 5 हो। एक नंबर आपके सामने दिया हुआ है 85, तो 85 का स्क्वायर मुझे बहुत जल्द बताएं, 3 सेकंड के अंदर अंदर। प्लीज हरी आप। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। नाउ अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो यूजुअली आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे बाबा आदम के जमाने का मेथड। 85 इंटू 85 लाइन, 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 8 जा 40 प्लस 2 42। यहां पे आप मारेंगे क्रॉस, फिर 8 5 जा 40, 4 कैरी ओवर, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, फिर मारेंगे एक लाइन, उसके बाद इसको ऐड करेंगे 5 2 2, फिर यहां कैरी ओवर हुआ 1, कितना बना 7, फिर आप नीचे भी जरूर लाइन मारेंगे। क्यों? क्योंकि आदत है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बाबा आदम के जमाने का मेथड। तो यहां पर खासकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया। देखिए 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से 8, फिर 8 से 5, फिर 8 से 8। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स आपके यहां हुए 4 4। अब बात करूं अगर एडिशन की, तो 1 2 3 4 तो यहां पर एडिशंस किए हैं हमने। इसके अलावा ये 2 कैरी ओवर्स भी हमने ऐड किए हैं। सो 6 हमने यहां एडिशंस के स्टेप लिए। सो इन टोटल यू हैव टेकन 10 स्टेप्स एंड यू माइट हैव टेकन 10 मिनट, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स लग गए होंगे। और उसके बाद भी कई बार हम श्योर नहीं होते, कहीं गलती तो नहीं हो गई, कहीं गलती तो नहीं हो गई। भाई एक बात ध्यान रखें कि जितनी लंबी प्रोसेस उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उतनी ही आपकी एक्यूरेसी कम होगी। तो जितनी छोटी प्रोसेस उतना ही कम समय लगेगा, और क्योंकि स्टेप्स कम हैं इसलिए आपकी गलती करने के चांसेस भी कम होंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो द शॉर्टकट्स ऑफ कैलकुलेशंस। तो यहां पर एक सिंपल सी चीज देखते हैं कि अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है, देखिए आज मैं यहां पर स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, और इसके अलावा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुबह की क्लास मेरी अटेंड करी हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और बिहार पुलिस की, बिहार एसआई की। तो उन लोगों को भी मैं बता दूं कि वो लोग सोच रहे होंगे कि ये सेम क्लास है। हां, शुरुआत की सेम है, बट यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशंस के और कुछ और बहुत अच्छे अच्छे
आपको कैलकुलेशन के टेक्निक्स बताना चाह रहा हूं जो कि इसके बाद में फॉलो करेंगी आगे जाके, तो बने रहें। तो अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है और आपने उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स तो 25 ही होंगे। क्यों? क्योंकि 5 5 25, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ऑलराइट, अब आप यहां पर यह देखें कि 85 में 5 के अलावा कौन सा डिजिट है? 5 के अलावा डिजिट है 8। अब 8 के बाद में काउंटिंग में, नंबर काउंटिंग में नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है? मतलब 8 + 1 क्या आता है? 9। उससे मल्टीप्लाई कर दें 8 को अपने नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 9 से, तो आपको फर्स्ट 2 डिजिट्स मिल जाते हैं, दैट इज 72। सो 8 9s are 72 फॉलोड बाय 25, काम खत्म। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, सो नाउ आई वांट यू टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 75 एंड यू हैव जस्ट 3 seconds. प्लीज हरी अप, प्लीज हरी अप। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। कुछ लोगों के आंसर्स आ भी गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हैं ये 5 से एंडिंग है, तो लास्ट 2 डिजिट्स आर एनी हाउ गोइंग टू बी 25। अब 7 के बाद में नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आया 8 एंड 7 8s इज गोइंग टू बी 56। दैट शुड बी आवर आंसर। जल्दी से बताएं 65 का स्क्वायर। प्लीज हरी अप, प्लीज हरी अप, द क्लास हैज स्टार्टेड, प्लीज हरी अप। ग्रेट, वेरी गुड, आई कैन सी सम आंसर्स हियर, फैंटास्टिक। 5 लास्ट में 25 तो आना ही है, सीधा देखो ना, 6 के बाद में आया 7, 6 7s are 42, आगे 25। नेक्स्ट 55 स्क्वायर, हरी अप प्लीज। ग्रेट, सो 5 into 6 is 30 followed by 25। नेक्स्ट 45 स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये 4 को देखो, 5 को मत देखो, क्योंकि लास्ट में तो 25 आना ही है, तो पहले क्यों बोल रहे हो? तो 4 into 5 is 20 followed by 25। 95 स्क्वायर, हरी अप गाइस। ग्रेट, तो 9 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है वो होता है 10। 9 into 10 हुआ 90 followed by 25। ओके, नाउ यू प्लीज टेल मी 105 का स्क्वायर कितना होगा? प्लीज हरी अप। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का जवाब आया। अब देखिए 5 के अलावा यहां पर है 10, तो 10 के बाद काउंटिंग में नंबर आता है 11। अब 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो उस नंबर के आगे बस आपको सिर्फ एक 0 लगाना है। करेक्ट? तो 11 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो गया, आगे 25 तो है ही, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, ओके, अब आप मुझे बताइए 115 का स्क्वायर। प्लीज हरी अप। यहां पे अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ऑल राइट, आई कैन फील दैट। ओके, तो 5 को अगर छोड़ दें तो हमारे पास में नंबर बचा 11। 11 के बाद में काउंटिंग में नेक्स्ट नंबर आता है 12। तो भाई 11 का जो पहाड़ा है, 11 का टेबल है, वो तो हमें सिर्फ 10 तक ही आता है ना। 11 12 था तो हमें पता ही नहीं था। देखिए, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया था 11 का टेबल कि अगर 11 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर को 2 बार लिख दो। मायने 11 into 5 55, 2 बार 5 लिख दिया। 11 into 7 77, 2 बार 7 लिख दिया। लेकिन 11 into 12 को क्या मैं 12 12 लिखूं? जी मैं लिख सकता हूं, लेकिन लिखने का तरीका ज्यादा अलग होगा। 12 12, बिल्कुल सही। सो दिस विल बिकम 132। नाउ सिमिलरली 11 into 13 अगर आप करना चाहें तो क्या बनेगा? 13 13, क्या आंसर आ गया? 143। 11 into 16 16 16, क्या आंसर आ गया? 176। मल्टीप्लाई किसको करना है जी? बार बार 6 1 6 1 1 6 ये सब क्यों करोगे यार? ये तो बहुत पुराने मेथड्स हो गए। तो खैर जी, एक बात और जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं
वो ये है कि अगर हम मान लें कि 5 इंटू 6 करते हैं, दैट वी नो इज 30, राइट। अब मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 प्लस 1, बात तो एक ही है ना। तो अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 5 स्क्वायर। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 5। दिस अगेन इज नथिंग बट इक्वल टू 30। 5 स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5, करेक्ट। नाउ द पॉइंट हियर इज, वी नो इन मैथमेटिक्स कि n इंटू n प्लस 1 इज नथिंग बट इट इज n स्क्वायर प्लस n। n संख्या या n जो नंबर है, इससे अगला नंबर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, n प्लस 1 ही कहलाएगा, करेक्ट। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप इसे n स्क्वायर प्लस n भी लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 6 कैन ऑल्सो बी रीरिटन एज 5 स्क्वायर प्लस 5। ये बात अलग है कि 5 इंटू 6 30 हमें याद है, लेकिन मैं बड़े नंबर्स की बात कर रहा हूं। जैसे 11 इंटू 12 है, तो 11 इंटू 12 को अगर आप चाहें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 11 स्क्वायर प्लस 11 भी लिख सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट 121 प्लस 11 which is 132, all right? So anyhow, 11 into 12, we got it to be 132, followed by 25. That is our answer. Now similarly, you please tell me how much will be 155 square. Please find out. Please hurry up. Come on, guys. Okay, so what do we do first? हमने निकाला 15 इंटू 16। 15 इंटू 16 क्या होता है, 15 स्क्वायर प्लस 15। 15 स्क्वायर कितना होता है, 225, प्लस 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 240, फॉलोड बाय 25। दैट इज इट। कितना आसान है, देखिए बहुत आसानी से मिल गया हमें ये। अब इसी तरह से अब हम मुझे बताएंगे कि हाउ मच इज, लेट अस से 255 स्क्वायर। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट से ट्राई कीजिए। 255 स्क्वायर, वंडरफुल, आई कैन सी सम आंसर्स हियर। सो दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट लिखो ना अब, 25 स्क्वायर प्लस 25। 25 स्क्वायर यू नो इज 625, प्लस 25 इज हाउ मच, 650, फॉलोड बाय 25। भाई तो ये लास्ट डिजिट है ना, तो लास्ट 2 डिजिट्स जो इसके स्क्वायर में है वो तो 25 ही आएंगे ना। क्लियर? ओके, नाउ प्लीज टेल मी हाउ मच इज 355 स्क्वायर। Come on, you can solve this. Hurry up, please. Okay, तो अब यहां पर हमने क्या लेना है भाई, हमने यहां पर लेना है 35 स्क्वायर प्लस 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है, याद है ना, 1225। कैसे भाई, 3 4 are 12, आगे 25, 1225 प्लस 35, सो दैट इज नथिंग बट 1260, आगे तो 25 है, तो घबराने वाली बात ही कहां है, करेक्ट। सो हेयर तो चलिए इसी तरह से लेट अस हैव अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी डेयरिंग रखो, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन फाइंड आउट 455 स्क्वायर। प्लीज फाइंड आउट 455 स्क्वायर, प्लीज हरी अप। चलिए शाबाश, जल्दी कीजिए।
All right guys, once again, if you look at this, 45 is what we have. तो 45 के बाद में next number we know is 46. But how do we resolve this? This is 45 square plus 45. तो कितना आता है अपने पास में? 45 square, do you remember? 4 5s are 20, 4 into next number, correct? आगे 5 का स्क्वायर 25. So 2025 plus 45, it should give us 2070 followed by 25. I hope this is very clear to you. So guys, now you are in a position to find out 555 square. Come on guys, hurry up. You have just 5 seconds to do so. बहुत fast, shabash. Okay, so now 55 into 56 is nothing but 55 square plus 55. And how much is 55 square? Well, just a minute please. Where did that screen go? Okay, let me do it on a fresh one. So 55 into 56 we have to do. But then this becomes how much? क्या बन जाता है ये? 55 square plus 55. 55 square, how do you find out? Well, 5 into next number 6. So 5 6 are 30 followed by 25 plus this 55. So 30, 25 plus 55. This is going to be 3080 और लास्ट में क्या आ जाता है? 25 at the end. So just now you calculated 555 square. If I would not have told you this technique, अगर मैंने आपको ये टेक्निक नहीं बताई होती तो आप क्या करते? आप करते 555 into 555 लकीर लाइन, उसके 5 5s are 5 5s are 5 5s are काटा क्रॉस, फिर 5 5s are 5 5s are लगे रहते फिर. Then you would have arrived at a wrong answer also. Then you would say, oh, I committed an error, silly mistake. There is nothing called silly mistake when it is going to cost you your career. So it's going to be a blunder. Why? Because आपने work hard नहीं किया. You did not work hard enough to find out the right, correct method, procedure and shortcut. So you have to keep on upgrading yourself. So just now we found out 555 square and so on. Whatever you want, you can find out these squares. All right? Okay. Now let's move on. Okay. अब हम देखेंगे squares of numbers greater than 100. So whichever are the numbers which are just more than 100, 101, 2, 103, 4, 105, 6, kind of. If you have to find out their squares, उसके square अगर आपको निकालने हैं तो आप कैसे करेंगे? चलिए देखें, आपके सामने है एक सिंपल सा क्वेश्चन. अगर किसी ने मॉर्निंग में सेशन अटेंड किया है तो he should be in a position to answer this. Those who are new, let's do it. So if you have 108 square, what would you do usually? आप क्या करेंगे? 108 into 108 line, 8 8s are 8 0s are 8 1s are cross 0 0 0. Very long method, obsolete, पुराने ज़माने का method, history it has become. All right, so as simple as that. If you want to find out 108 square, there is a very, very simple process. So for any number which is greater than 100 but near to 100, for any number which is greater than 100 but near to 100, कोई भी संख्या जो 100 के करीब हो उससे थोड़ी सी ही बड़ी हो,
उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट 100, डिफरेंस यू टेक. हाउ मच इज द डिफरेंस? Difference is 8. Now what do? You add this difference back to the number. You add the difference back to the number. Which difference? The difference that you took from 100. So simple, 108 is greater than 100 by how much? It is greater than 100 by 8. Alright? So you can just add 8 to this. तो हमें क्या मिला? हमें मिला 116. और उसके बाद में जो भी डिफरेंस है, वट एवर इज द डिफरेंस, यू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट डिफरेंस टू गेट द रिक्वायर्ड स्क्वायर. सो व्हाट डू वी गेट हियर? 11664 ये नंबर आया आपका, जो कि 108 का स्क्वायर है. दो स्टेप्स, वी टुक ओनली 2 steps. सो 108 plus 8, 116, followed by 8 square, 64. All right, so we got our answer here as 11664. Now find out the square for 107. Please hurry up. Come on. Okay, some of you are already ready with your answers. Fantastic. Good work. That is called speed. So what do? 107 is greater than 100 by how much? 100 से कितना बड़ा है? 107. 7 ही बड़ा है. तो 107 plus 7, we will get 114, and 7 square will be 49. So 11449, simple answer. Tell me the answer to this question. Please be fast. 109 square. Very fast, please. Yes, great. So 109 plus 9, 1189 square is 81. So 11881. This is what should come into your mind, right? Next question. 106 square. Find out. Okay, 106 is greater than 100 by 6. Okay, so you double that. 106 plus 6, 112. 6 square, 36. Next question. 103 square. Please be fast. Perfect. So what you have here is 10609. 103 plus 3 is 106. Then 3 square is what you will get as 9. So now this becomes much more faster and much more easier. Right? Now in the wake of the same, let me just ask you, what would be 111 square? Okay, now you see, I'll just tell you this one. Please focus. सब लोग यहां देखें. 111 100 से कितना बड़ा है? 111 is greater than 100 by 11. This is the difference. So what do? 111 plus 11. आप इसमें 11 जोड़ देते हैं. Correct? अब आगे आप यहां पे क्या लेते हैं? 11 square. Now how much is 11 square? We will take the square of the difference. So 11 square is 121. लेकिन लास्ट में तो आपके पास में सिर्फ 2 ही जगह बची हैं. एट द एंड यू हैव ओनली 2 blank spaces left. जबकि 11 square is 121, which is a 3-digit number. So how do you fit a 3-digit number into 2 places? Well, this is what you do. You take 1 here as carryover and you write it as 121. Can you see this one? So this 1 becomes carried over. Now what do you have? 111 plus 11, 122 plus this one which was carried over. So you get 123. So your answer here is 123.21. I'll do another one. Don't worry. Okay, so let's do this one. You can try along with me. 112 square. Come on, guys. So what do we get? क्या मिलता है यहां पर? 112 plus 12 और 12 का स्क्वायर कितना है? 144. So 1 carry over हो गया. 1 gets carried over. So 112 plus 12 is 124 plus 1 is 125. So your answer here is 12544. All right. Now similarly,
Tell me what would be the square for 114? Hurry up. Well, for that you should know 14 square is 196. I'll just help you out with that. Hurry up. Okay. Now you see 114 difference from 100, 14, all right? Square of 14, 196. See, 196. One gets carried over. Okay, so 114 plus 14, that is 128, plus ये जो 1 carry over है वो, तो it becomes 12996. How simple is that? Now what you will do is, you will tell me how much is 122 square. Please hurry up. Hurry up, hurry up. The problem here is you don't know 22 square. That is why you're taking longer time. So you must be aware of your squares and cubes. So 22 square, I'm just trying to help you out here. It's going to be 484. Now you calculate. Please hurry up. Follow the procedure. Okay, guys. So 122 plus 22, which is difference. All right. And 22 square, what is that? 484. Like this I have written. 484. 4 I have taken as carryover. So 122 plus 22, 144. Plus this 4, carryover. 144 plus 4, 148. As simple as that. 122 square is 14884. Easy? Do you find it easy? Yes? That's how you should be calculating. Alright? अगर बैंकर बनना है भाई, कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी. यही ट्रिक्स हैं जो आपके सामने हैं. सिंपल ट्रिक्स मैंने नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई. वैदिक मैथ्स, द वैदिक मैथ्स. ऑलराइट? तो अपना हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखें, खासकर कैलकुलेशन में, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो जब हमने बात करी उन स्क्वायर्स की जो कि 100 से बड़े नंबर्स के थे, तब हम बात करेंगे उन स्क्वायर्स के जो कि 100 से थोड़े छोटे नंबर्स के होंगे. सो लेट अस टॉक अबाउट नंबर्स which are lesser than 100 and let us find out their squares. Lesser than 100, 91, 92, 93, 94, 95, 96. उसके squares कैसे निकालेंगे? How will we find out their squares? Now, please try out the square of Okay, here we go. 93 square is what I want. तो आपको जैसे भी आता, whatever you know, please tell me your answer. Please be fast. You have to be fast. Okay. See. Now listen to me very carefully. This is not a particular session which is a teaching session. This is a simulative environment that we are trying to create here, all right? So what you have to do is you have to work along with me. One thing that you must do, you have to focus on speed. All right? Accuracy is already there within you. You have the accuracy. आपके अंदर accuracy है. आप सिर्फ अपनी speed पे ध्यान रखें. तो चाहे मुझे गलत उत्तर दें, please answer me wrong, but please be fast. You cannot compromise on speed. Don't stop yourself. Don't slow down. Okay? Okay. So here we go. 93 square. I'll do this one for you. Same thing, minus 100. Difference from 100. Minus 100. So what will be the difference here? 7 nahi, 7 nahi. It will be minus 7, negative. Okay? So this time you know that this is going to be a 4-digit number. तो ये एक 4 अंकों की संख्या होगी. Alright? अगर ये 4-digit number है, तो क्यों है? 5 डिजिट क्यों नहीं था? ऐसा क्यों था कि पिछले क्वेश्चंस में जो हमने नंबर्स देखे थे 100 से ऊपर थे, वो 5 डिजिट थे. देखिए 100 का स्क्वायर कितना है?
100 का स्क्वायर इज 10,000. 10,000 is 1 followed by 4 zeros. Okay, so 10,000 is a number जिसमें 5 डिजिट्स हैं, जो कि 100 का स्क्वायर है. तो 100 से जो भी छोटे नंबर होंगे वो अब 5 डिजिट के नहीं होंगे, क्योंकि 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. उससे पिछला नंबर कौन सा है? 10,000 से एक नंबर पहले कौन सा है? 999 और 999, 9,999, 4 digit number, remember? Okay, so now what do? You do the same process. You simply do the same process. From 93, this time you reduce, subtract, घटा दें 7. तो अब आपके पास में क्या आया यहां पर? You get 86. Again, whatever is the difference, जो भी यहां पर अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसका स्क्वायर लें. तो नंबर चाहे 7 हो चाहे -7 हो, उसका स्क्वायर आएगा 49. और so as to say, the square of a positive number and negative number is always a positive number. Squares will be positive for a positive or a negative number. Okay, तो 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आएगा, -7 का स्क्वायर लेंगे तो भी 49 आएगा. Okay, now this is another very simple process. So tell me the answer to the next question here. 94 square. Come on, hurry up, guys. Difference from 100. So 94 minus 6. Take it here only. How much do we get? So 94 minus 6 we will take. That is 88, and minus 6 square will be 36. Your answer. Tell me your answer for 96 square. Come on, please hurry up now. Difference is how much? Difference is how much from 100? -4. So 96 minus 100. 96 minus 100 will be -4. 96 minus 100 will be -4. Okay? So 96 minus 4 will be 92. Minus 4 square will be 16. 9216 will be our answer. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं मुझे जल्दी से. 92 स्क्वायर. प्लीज हरी अप. स्पीड स्पीड. यू हैव टू बी रियली फास्ट. Okay, difference is 8. So minus 8. 92 minus 8 is going to be 84, and minus 8 square is going to be 64. 84, 64 is your answer. Next question, please. 97 square. Please be fast. Hurry up, hurry up. All these calculations, they come in your examinations. IBPS PO में ये वाली कैलकुलेशंस का बहुत महत्व है. ये वाले स्क्वायर्स आते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 97 minus 100, as you see, is -3. That is what I am doing here. Okay, so 97 minus 3 is 94, and minus 3 square this time is going to be 09. Last 2 digits we have to occupy the last 2 digits places. Okay, so 9409 should be the answer. So this is one very easy method of finding out squares for numbers which are near to 100 but lesser than that. Okay, so I have another question for you guys. You have to be smart at calculations. That is your preparation. Your preparation is only one. That is fast calculations. If you're fast at calculations, then everything else is laddu. Don't worry about it. Okay, so here I have a question, and that is 88 square. What do we get? Find out. Okay, minus 100, how much do we get? Minus 12. So here we should get 88 minus 12. कितना आ गया बताइए? It is going to be 76. But then minus 12 का स्क्वायर कितना होगा? It will be 144. तो इसे अगर आप पूरा कंबाइन करेंगे
then what should be our answer? 7744. As simple as that. ओके अब देखो ना, इसी मेथड से लेट अस फाइंड आउट, हालांकि हमें पता है एक मेथड 85 का स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन इसी मेथड से लेट अस फाइंड आउट 85 स्क्वायर. सो -15, 85 minus 15 is 70, बट देन 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. So finally what do you get? 7225. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Please tell me. All right. So here we go. अब हमें यहां पर 100 से बड़े नंबर, 100 से छोटे नंबर दोनों के स्क्वायर्स निकालने आ गए. We have found out, we have learned the trick to find out the squares which are near to 100, greater than 100, lesser than 100. Okay, so let us move ahead and look at some other concepts. और भी चीजें सीखते हैं, चलिए. Okay, squares of number greater than 50 but near to 50. Okay, like I have a question for you. Find out 56 square. Can you find out 56 square? I'll give you 5 seconds. Okay, now अब यहां पर the technique is different. Here I'll teach you another technique. All right, now see, 56 square if you take, this time we are going to take the difference not from 100 but from 50. Here the base is 50. Please remember. Okay, so 56 is greater than 50 by how much? 6. 56 जो है वो 50 से कितना बड़ा है? 6 ही तो बड़ा है. It is going to be a 4-digit number. Correct? Now what do you do is कि ये जो 6 है, जो डिफरेंस आ रहा है, इसे हम 25 में ऐड करेंगे. ऐसा क्यों करेंगे? Why will we do that? Because 50 square is how much? 2500. ओके, यहां 51 स्क्वायर है अगर, तो यह आता है 2601. यहां पे 1 ऐड होगा, देखिए 25 में. यहां 52 स्क्वायर आता है अगर, तो इट विल बी 2704 एंड सो ऑन. ओके, यहां पर देखिए 25 में 2 ऐड किया है. Likewise, so here what we will do is this difference we will add now to 25. तो अब ये difference जो है हम 25 में add करेंगे. तो 25 plus 6 you get 31, again followed by the square of the difference. 31, 36. एक बार देख लीजिए, आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट से देखिए इसको, समझिए, क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ये. 56 स्क्वायर, सो 56 माइनस 50, डिफरेंस 6. किस में ऐड करना है? यू हैव टू ऐड इट टू 25. सो 25 प्लस 6, 31, फॉलोड बाय 6 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस. रिमेंबर, वी ऑलवेज टेक द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस. डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं हम, तो 31, 36. ओके, now similarly you tell me the answer for 57 square. जल्दी करो, please find out. Okay, so what do we have here? 57 square. कितना बड़ा है ये 50 से? 7 बड़ा है भाई. करेक्ट. सो नाउ किस में ऐड करेंगे? 25 में ऐड करेंगे. Okay, so here 25 plus 7, 32, followed by square of the difference, that is square of 7. हमें मिलना चाहिए 49. So 3249 should be the answer here. Easy, easy. Let's see. Find out the square for 53. Hurry up, you have to be fast. Top speed. Don't be afraid of committing error. You're absolutely fine, you're okay, normal, so you will not commit any error. Top speed, come on guys. Okay, so what do we have here? 53 square.
इट्स ग्रेटर देन 50 बाय हाउ मच? कितना बड़ा है भाई 50 से ये? 3, तो 25 में ऐड करेंगे जी ये 3, व्हाट डू यू गेट? 28, and how much is 3 square? 09. So what you have here is a 2809. Is this clear? Okay. Now find out the square for 62. 62 square, please. Okay. So now we have is 62 square. अच्छा, तो ये तो और आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 62 स्क्वायर कैलकुलेट करना है। What do you do? Take the difference from 50. How much do we get? 12. किस में ऐड करेंगे? 25 में ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा? 37. बट यहां पर क्या आएगा इन दो प्लेसेस के लिए? 12 स्क्वायर। हाउ मच इज 12 स्क्वायर? 144. Correct? So 25 plus 12, 37 plus 1, 38. So 3844 should be the answer. Now find out the answer for 64 square, please guys, hurry up. You got to be really fast. All right, guys, 64 ka square is what we need. So let us do it. 64 minus 50, if you want the square here, we have it as 14. What do you do? Come on, come on, come on, hurry up. So what do you do? 25 plus 14 is nothing but 39. अब 14 का square कितना होता है? How much is 14 square? It is nothing but, just a minute, I'll do this again, no problems. Small things happen. Good, I'm going to get better. Okay, I think the ink that I'm using is Jinx, right? So what we will do is we'll change the ink this time. Blue, let's play blue. Okay, so we have 64 square. Okay, difference from 50 कितना हो गया? 14. So what do you have here now? 25 plus 14. Followed by square of the difference. Difference का square. Difference कितना है? 14. 14 square. 196. चलो एक काम करता हूं, इसके नीचे लिखता हूं उसको. I will write it below this. Okay. So let me just write it here. 196. ये आ गया जी. This is what we are looking for. Okay. So what you get here is a 4096. See, 6 here, 9 here. 5 plus 4 plus 1, 10. 1 carry over. So 2 plus 1 plus 1, 4. Now this 4096, let me tell you, is a very important number. Okay. Now why is it so? Because please remember that 64 square is also equal to 16 cube, and both are nothing but 4096. So 4096 is a very, very important number. Why so? It is both a square and a cube. क्या बोला मैंने? It is both a square and a cube. Square भी है, cube भी है. Square किसका है? 64 का. Cube किसका है? 16 का. तो क्या ऐसे कोई और ऐसे numbers भी हैं which are both squares and cubes? Okay, good. We have 729. Now what is 729? It is 27 square as well as 9 cube. Then we also have 8. What is 8? Well, no, not 8. I'm sorry. I'll just remove this one. Wonderful.
Okay, I'm talking about another number, and that is 64. 64 is 4 cube as well as 8 square. Can you tell me one more number? One more, one more, one more, one. So 1 is 1 cube and as well as 1 square. These are very important 4 numbers. ये numbers जो हैं ये number series, number analogy, number odd one out, missing number, बहुत सारे ऐसे questions भी हैं जहां पर कि इन numbers का इस्तेमाल होता है. So these 4 numbers you got to memorize. Which are those? 1, 64, 729 and 4096. In front of you, I'll just change the ink and write it again. 1, 64, 729 and 4096. Is this clear? Okay, now let us move on to the next one, please. So numbers which are greater than 50, 50 से जो बड़े नंबर हैं उनके स्क्वायर तो हमने निकाल लिए. अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स लेसर देन 50, 50 से छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स. 47, 48, 45, 43, 42, 38, इस तरह से. Process is almost the same. 46 square. Now let us have a look here. Same process है. -50 करना है आपने. But this time what do you get? You get -4. Difference is negative. Is this clear? तो अब क्या करोगे भाई? यहां पर 25 में से 4 माइनस करोगे. जो यहां करना है ना इन दो जगह पे वो 25 में से करना है. या तो 25 में ऐड कीजिए या फिर 25 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए. तो ये आ गया जी 21 -4 का स्क्वायर 16 2116. बन गई बात. Now similarly find out 47 square. Please hurry up. Please be fast. Okay, let us do this then. 47 square is what we are looking at here. Okay, तो चलो भाई 47 square, तो भाई -50 कीजिए. How much do we get? -3. So 25 minus 3, 22 minus 3 square, that is 09. As simple as that. All right, now please tell me 43 square. Please hurry up. Do this one fast. Lovely, very good, very nice. You are fast. You ought to be fast, in fact. That's again very important. So what do we get here? 43 square minus 50 is nothing but -7. Okay, so 25 minus 7, how much is that? That is 18. Minus 7 square, 49. 1849, as simple as that. Okay, so do the next one. 38 square. Okay, process is same. 38 square, please hurry up. -50. कितना आया? -12. Okay, so 25 minus 12. How much do we get? 13. And then how much is -12 square? 144. Combine these. You get a very, very simple number. 1444. Which I want you guys to memorize. 38 square, 1444. 38 square, 1444. Repeat with me 3 times. Repeat with me 3 times. 38 square, 1444. 38 square, 1444. 38 square, 1444. Done. Alright, revise it 2-3 times, it will be registered into your mind. Alright guys, now tell me 36 square, please be fast. 36 square, fast, fast. This is how we go about doing the things fast, don't we? -14 square, right? So,
What do we have? 25 minus 14. What do we get here is a 11. Then minus 14 square, 196. Okay, combine these. Let's do this again, just a minute. Let's do this here. 36 square minus 50 minus 14, 25 minus 14, कितना आ गया? 11 minus 14 square, कितना होता है? 196. Club these. What do we get? 1296. Very simple one. 36 square, 1296. You got to memorize it. In fact, आपको याद होना चाहिए 36 square is 1296, 1296. Okay, so far, so good. Now, let's move on to another concept. Now, how do you find out squares of numbers consisting of 1 and 0 only? तुम्हें ऐसे नंबर भी दिखेंगे जिसमें सिर्फ 1 है या 1 और 0 हैं, तो उनके स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे? So you need to find out square of this. Please find out. Hurry up. I know some of you know this. Very good, very good. So you just need to be fast while typing your answers. Come on guys, hurry up. I don't mind wrong answers, but you need to be fast. Come on guys. Okay. So what do you do here is, observe this concept which I am presenting in front of you. 1 square, कितना होता है? 1. 11 square, कितना होता है? 121. And if you remember, we also found out 111 square, which was 1, 2, 3, 2, 1. Was it or not? Okay. So I would like to explain one concept here. In 11, how many ones are there? In 11, how many ones are there? 2. तो 1 से लेकर 2 तक गिनती गिनो और फिर रिवर्स में दोबारा लिख दो. काउंट फ्रॉम 1 to 2. राइट डाउन द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 2. Right? What is 2? The number of ones. How many ones are there? 2 ones are there. So 1, 2, back to 1. 1, 2, 1. Palindrome. What is a palindrome? What is a palindrome? Palindrome is that number or that word which sounds or which seems the same when you read it from left to right or from right to left. Palindrome एक ऐसा नंबर या ऐसा शब्द होता है जो आप बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं पढ़ें एक समान दिखता है, उसे कहते हैं पैलिंड्रोम. तो बहुत सारे पैलिंड्रोम आपको पता भी होंगे. इंग्लिश में कुछ नेम्स हैं, इफ यू रिमेंबर. नमन है यहां पर कोई? यस. Any other word? Please suggest. Is there any other word? Are you writing down? Okay, here I come. Aurora. Okay, there is one language as well. What is this? Malayalam? No. Don't pronounce it as Malayalam. This is Malayalam. Malayalam. Right? So read it from left or from left to right or right to left. It will be the same. Then there are so many other words which are there. Radar. Then again, there would be certain numbers as well. Okay? That you can look at. 2, 4, 5, 4, 2. आप left से right पढ़िए या right से left पढ़िए. It will be the same. So these are called basically palindrome. Alright? So what do you do here is you count the number of ones. In 111, what do you do? Number of ones are 1, 2, 3. So count from 1 to 2 to 3 and then come back. So 1, 2, 3, 2, 1. Alright? The number of ones here are 3. Right? So you will write counting till 3 and then you will write the counting in reverse order.
Now similarly यहां पर कितने ones हैं? How many ones are there? 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 ones which are there. So you will write, you're counting up to 7. 1 2 3 4 5 6 7. Reverse. 6 5 4 3 2 1. Trust me, you can't find out this square even using your calculator. Calculator का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते आप ये स्क्वायर निकालने के लिए. ठीक, तो कितना आसान है. तो इसे ऐसे ही मुझे एक और क्वेश्चन है जो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे. प्लीज हरी अप. टेल मी हाउ मच इज दिस. ऑल यू हैव टू डू इज काउंट द नंबर ऑफ वंस. लवली. 1 2 3 4 5. तो कहां तक लिखना है? 5 तक गिनती लिखनी है. पांच तक गिनती लिखिए. 1 2 3 4 5. रिवर्स करो. 4 3 2 1. डन. नेक्स्ट. अगर बीच में जीरो हो, if you have two digits, 1 as well as 0, then what do you do? All right, very simple one. So before you attempt this question, आप इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ध्यान से देखें. 1 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या होता है? Can you tell me? All right, so let's try this question. Let us say if I would have written 111, अगर मैं लिखता 111, है ना, तो 111 का स्क्वायर कितना था? You remember? Absolutely. So it was 1, just a minute please. It was 1 2 3 2 1. Correct? बट यहां पर अभी क्या हुआ? यहां पर बीच में जीरोस भी लगे हुए हैं. देखिए. करेक्ट. So this is 1 2 3. When you go from 1 to 2, you get a 0 in between. So put a 0 in between. When you go from 2 to 3, second to the third one, second to the third digit 1, then again you get a 0 in between. So write a 0 in between. All right, then write it in reverse. Because while coming back, जब आप वापस आते हो 3 से 2 पे, while coming back you again see a 0. Coming from 3 to 2, you find a 0 in between. Coming back from 2 to 1, you find a 0 in between. So same. And as it is, this is going to be a palindrome. 1 0 2 0 3 0 2 0 1. So now similarly, how many ones do we have here? 1 2 3 4. So what do? And you have a 0. एक single 0 है यहां पर बीच में. तो आप लिखेंगे इसको 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1. That should be the answer. All right. Next question. Please find out the answer very fast. Very easy one. Very easy. Perfect. 1 2 3. How many zeros in between? 2 zeros at a time. So 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 1. There you go. All right. Answer the next question, please. Careful. See how the zeros have been arranged in between. Okay, how many ones are there? 1 2 3 4. 2 zeros, 1 0, 2 zeros. Correct? Then what do? 1 0 0 2. Why? When you go from 1 to 2, जब आप 1 से 2 पे जाते हैं तो 2 0 आते हैं. तो 1 0 0 2. 2 से 3 पे जाते हैं तो एक ही 0 आता है. Only 1 0 appears. So 2 0 3. When you go from 3 to 4, 2 zeros appear. 0 0 4. Reverse the order now. Reverse the order. Look at it like this. 4 0 0 3 0 2 0 0 1. Your answer. I hope this is very clear to all of you. Right? So even such kind of calculations are very simple. It is not only about a particular type of question or pattern coming into the examination or not.
It is about having the awareness of whatever questions are or what are the short tricks are present in the market, right? And who knows, क्या पता इन short tricks पर भी कोई question आपको मिल जाए, तब सीखना थोड़ा शुरू करेंगे, right? So let's move on to the next concept here, please. I'm going to talk about squares now. Very important. You need to memorize squares from 1 to 40. Invariably, unquestionably. So don't say, hey, oh, nothing doing. You want to become a PO, huh? Arre, to fir, you need to work a little bit, no? Right? So memorize squares till 40. Very important. So don't tell me, sir, I remember squares till 20. Good, but half good. Okay? So today itself, there is no tomorrow. You never ever do anything tomorrow. It's today only. So today itself, memorize the squares from 1 to 40. All right? 1 to 20, you don't have a problem, I believe so. All right? So what is 1 square? 1. Now you please speak out along with me. 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 13, 169, 11, 121, 12, 144, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, and 20, 400. That's how it is, right? So yahan tak to I don't think there would be a problem. But many of you don't remember squares from 21 to 40. Let's have a look. Very simple ones. 21 square will be 441. 22 is 484. 23 is 529. 24 is 576. All right. 25 is 625. So I think there is someone who might ask me, sir, is there a shorter way of memorizing this? Yes, there is a very shorter way. Very, something which is not going to take much time and which is going to require less effort. Well, take a copy and a pen and write down these squares 5 times on different pages. You will be able to memorize them, period. That was the simplest method, all right? So don't look for shortcuts everywhere. Okay, so 25 as it is, we remember, right? 25 is not a problem. That's a 625. So you have 26 square, that is 676. 27 square is 729, 28 square is 784, 29 is 841, 30, no issues, 900. That is what we have. Well, let's go from 31 to 40. Okay, so 31 square, 961. Here we go. Then 32 is 1024. Very important number because this is also supposed to be 2 to the power of 10. Because 32 is what? 32 is 2 to the power of 5. Isn't it so? So just remember these values, these power values as well. 33 square, very simple one, 1089. 34 square, 1156. 35, again you can find out, no? 3 4s are 12 followed by 25, 12, 25. Okay. 36, you remember we discussed this, 1276. है ना, वो 50 से कम वाले squares जब calculate कर रहे थे ना, then we found out 36 square, you remember? Then 37, 1369, 38, you remember? I memorized you. 38 square, 1444. 38 square, 1444. 39, 1521. And then finally, you have 40 square, that is 1600. We'll just make a correction here. This is 1521. Okay, that is only one. That is you need to correct. Okay, so here I want you to go through something. Look at this number. 12 square is 144. Also, 21 square is 441. See, 12, 144. Reverse the order of digits. उल्टा कर दो इसको. 12 का क्या बन गया? 21. बना ना? Reverse the order of the digits of squares. 144 को उल्टा लिख दो. क्या बन गया? 441. हर जगह नहीं होता है. It does not happen in every case. Alright, so please make sure it happens only in the case of 12 here. 12 and 21. Well, not only that. Well, 13 and 31 also. I would say that. Okay. Now 13 square, as you see, is 169. Reverse the order.
31, reverse the order, 961. So as you see, 31 square is 961. So maybe these are 4 squares which you already remember. 12 square is 144 reverse, 21 square is 441. 13 square is 169 reverse, 31 square is 961. All right. Now apart from that, I want you guys to have a look at these numbers, these squares, okay, as well as this one. Now 13 square is 169, 14 square is 196, and 31 square is 961. So basically 1, 6 and 9. It's important for you to note this, that 1, 6 and 9, these 3 digits actually form 3 different squares. All right. Now what are the squares here? Yeah, this is 1 to, just a minute, 1 to 5, 6, sorry. 36 square, no? Oh, sorry. I just committed an error here. I'm really sorry. Yeah, this is 1296 actually. That's what we have here, 36 square. All right, my bad. Anyhow, 1, 6 and 9, these are 3 digits which will be responsible for making 3 squares. They are involved in 3 squares. Which are those? 169, what is that? 13 square. 196, what is that? 14 square. And finally 961, what is that? 31 square. तो बहुत आसान है जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि 169 से 3 स्क्वायर बनते हैं, 169, 196, 961. All right. Now similarly, just catch hold of these as well. Now apart from that, all right, we move on to a question here, and I just want you to notice one more thing, that the squares here are ending in which digits? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. See, what does it say? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1. You can write it like this also. So these are the digits in which the first 9 squares will end in. Okay. तो अब आपने कौन कौन से नंबर देखे? 0 is also there. 10 square is 100. So a square will end in, let us say, 0, 0, 1, 4, 5, 6 and 9. इसका मतलब ये हुआ, a square will never end in 2, 3, 7 or 8. This is what we have. A perfect square never ends in 2, 3, 7 or 8. All right, so it must end in 0, 1, 4, 5, 6 or 9. Okay, that is what it is all about. So you can just memorize these 4 digits as well. Memorize them as 2378. A square never ends in 2378. A square never ends in 2378. The unit digit of a perfect square cannot be 2, 3 or 7 or 8. Alright? तो कोई भी अगर perfect square है तो उसका unit digit ना तो 2, ना ही 3, ना ही 7, ना ही 8 हो सकता है. I hope this is very clear to you. Okay? Now I have a question for you. If in a 3-digit square, the order of the digits is reversed, उल्टा कर दिया, to form another 3-digit square, then what will be the highest value of the difference between these 2 squares? Okay. Now, we already have pointed out, we already know, हमने अभी देखा भी था कि ऐसे कौन से स्क्वायर हैं जिनकी स्क्वायर्स को अगर हम उल्टा कर दें, है ना? If at all we reverse the order of the digits in a square, still we will get another square. Now, which are those numbers? If you remember, the numbers were 12 square, 144. Reverse the digits, what do you get?
441, which is nothing but 21 square. Read the question again. Read the question again. If in a 3-digit square, the order of the digits is reversed. This is a 3-digit square. Order of the digits is reversed. What do you get? क्या मिला हमको? 441 मिला. Correct? So we are able to form another 3-digit square, which is 441. Then what will be the highest value of the difference between these two squares? Highest value of the difference. Do we have any other such combinations? और भी है ऐसा कोई combination अपने पास में? बताओ भाई. बिल्कुल है जी. So what we have is a, let us say 169. What is that? अभी हमने बात भी की थी, याद है? 13 square is 169. If we reverse the order, what do you get? Well, you get a 961. 31 square. True. Now, out of these two pairs, which one will give you a higher difference? A higher difference will be obtained here. कहाँ पे ज़्यादा difference आएगा? भाई यहाँ पे अगर minus करोगे तो difference बड़ा आएगा ना? Highest चाहिए ना? तो यहाँ पर करोगे तो ज़्यादा आ ही नहीं रहा. Correct? क्योंकि ये तो कुछ 200 and something आ रहा है. यहाँ पे difference करोगे तो ज़्यादा मिलेगा. बड़ा difference मिलेगा. Highest. So 11 minus 9 is 2. Then you have a 9 here and a 7 here. 792, which is given to us in choice C, shall be the correct answer. Right? So just go through this question again once the class gets over. When you're revising with the video, you must look at this question again. This is a very important question. This has appeared in one of the examinations as well. Perfect cubes we are talking about. As important as squares from 1 to 40. You must memorize the cubes from 1 to 20 as well. Kindly have a look at these cubes. Again, once again, I think cubes till 1 to 10, from 1 to 10 or 1 to 12, 13 should not be a problem. Beyond that, it would be a problem. So be it. It will take you some time. You still got to prepare, right? So you take your time, not much of it, but make sure that you memorize these cubes. So 1, 2, 8, 3, 27, 4, 64, 5, 125, 6, 216, 7, 343, 8, 512, 9, 729, 10,000. Rest all are quite simple. 11 is 1331, 12, 17, 28. Again, 13 is 2197, 14 is 2744. Then you have 15, this is 3375. 16, I pointed out, if you remember, 16 cube is 4096, which is also 64 square. If you remember, 4096 is a number which is both a square as well as a cube. It is square of 64 and cube of 16. 17, 49, 13, 18, 58, 32, 19 you have as 68, 59, and 20 you have as 8000. All right, so you must memorize these cube values as well. Okay, so this would be quite important from the point of view of calculations. Okay, so as early as possible, please memorize these squares and cubes and the processes. जो भी हम method learn कर रहे हैं, वो method समझें. Prime number. Now, what is a prime number? हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं. लेकिन prime number क्या होता है? Prime number is a number which has exactly two factors. It has exactly two factors. Means it is divisible by only two numbers. Which ones? 1 and itself. Absolutely correct. I could hear you here. Very well done. So a number which is divisible by only 1 and itself and is not divisible by any other number is called a prime number. Alright? So from 1 to 100 there are 25 prime numbers. Which is the first prime number? 1? No. 1 is neither prime nor composite. Now this is something I want you to remember and have clarity about it. Okay. 1 is neither prime nor composite. प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर हैज टू फैक्टर्स. कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कॉम्पोजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स. At least 3 factors like 25.
What are the factors of 25? 25 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 1, 5, 25, तीन हुए ना नंबर, है ना? इसी तरह से कोई और नंबर पकड़ लो, 36 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है? फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, not 8, 9, right? And then you have 12, then you have 18 as well, right? So these are the numbers which would divide 36. ये सभी उसके factors हैं, तो 36 is a composite number. But prime number will have only two factors, 1 and itself. So please remember that there are 25 prime numbers from 1 to 100 and 22 is the only even prime number. दो के अलावा और कोई भी इवन नंबर नहीं हो सकता जो प्राइम नंबर हो, right? Apart from 2 there cannot be any other number which could be prime. Even number I'm talking about. Okay, so rest of the numbers have to be odd. They have to be odd. Okay, so 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. So from 1 to 50 there are going to be exactly 15 primes. 15 prime number मिलेंगे. Correct? Now you already know that there are 25 prime numbers from 1 to 100. Okay, so which also means that from 51 to 100 there will be 10 prime numbers. Now which are those? Let's have a look. We have 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. Okay, so as it is, please know that this is a live session that you're watching, all right? So please go ahead and talk as much as you can, all right? Make some noise. You're absolutely welcome about it. So do share this link as well if at all you've liked it, okay? And ask other people to subscribe and join as well. Anyhow, now I want you to point out something. Why 91 is not a prime number? Well, very less number of people know that this is 13 into 7. Memorize it right now. Apart from that, kindly know that in 90s, there is only one prime number and that is 97. In 90s, there is only one prime number and that is 97. So you should not have any confusion in your mind. 93, no, 93 is divisible by 3. 95, divisible by 5. 99, divisible by 9 and 11. So in 90s, there is only one prime number, which is that 97. What is 91? What is 91? What is 91? 13 into 7. 13 into 7 is 91. Now, this also comes in pretty handy when you take up certain calculations pertaining to questions. Alright, तो ये बहुत important number है, इसे याद रखें क्योंकि ये काफ़ी सारे प्रश्नों में भी आया है, questions में भी आया है, जिसमें कि आपको ये number use होता है. Okay, तो चलिए right arm over the wicket आगे बढ़ते हुए. I want you to find out prime numbers from 101 to 200. Now I'm already declaring that there are 21 prime numbers from 101 to 200. Okay. Now, as you see, 101 to 200, कितने number होते हैं 101 to 200 तक? 101 to 200, there are 100 numbers. Out of these 100 numbers, भाई 50 number तो जो होंगे वो तो even ही होंगे ना? 50 numbers will be even numbers. So even those even numbers cannot be prime number. So we'll just take them out. So out of these 100 numbers from 101 to 200, out of these 100 numbers, 50 even numbers go away. How many left? 50. Which are those numbers? Odd numbers. Okay. Out of these 50 odd numbers, I'm taking out the multiples of 5. जो भी 5 के multiples हैं, वो 5 के multiples मैं बाहर निकाल रहा हूँ. कौन कौन से? 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195. Got it? So these 10 numbers out. So out of 40, how many out? 10 more. Sorry, out of 50, 10 out. How many are we left with now? 40. Out of these 40 numbers, I have written these 40 numbers here. 40 odd numbers. We will figure out these 21 prime numbers.
See, 8 out of these 21 prime numbers are very easy and very simple to memorize. The first 4, as you see here, these are prime numbers. One zero one, 101, 103, 107, 109. So these starting four odd numbers, they are prime numbers. Now similarly, the last four odd numbers, 191, 193, 197, 199, even these are prime numbers. Very simple. 8 numbers at least you remember now. 101, 103, 107, 109. Similarly, 191, 193, 197, 199. Very easy. So 8 we have already figured out. 8 तो हमने ढूंढ लिए 21 में से. बाकी कितने बचे? 13. Let's figure out. Triple one. Now let's not just take up each of these and figure out. Here one more thing, यहाँ पर एक और चीज है कि divisibility rules जो हैं numbers के, you should know them. Okay, things will become much more simpler, obviously. Now let me just tell you, these are odd numbers हैं ये. So the numbers here would be divisible by either 3 or 5 or 7 or 9 or 11 kinds. Just a minute. Now we have already removed those numbers which end in 5. Now आपको यह भी पता है कि any number which is divisible by 9 must be divisible by 3 also. True? तो 9 भी हटा दो. Because any number which will be divisible by 9 would also be divisible by 3. So we will not check for 9, we will check for 3. So now we are left with only 3 numbers. Divisibility rules, we need to check for 3. We need to check whether a number is divisible by 7. We need to check whether the number is divisible by 11. Correct? तो चलिए एक काम करते हैं. सबसे पहले 11 वाला देख लेते हैं. Okay, so 11 nines are 99. Next number divisible, 110. But why should I add 11? I should add 22. Okay, so 99 plus 22. Because if you add 11 to 99, 11 odd, 99 odd, odd plus odd, you get an even number. And we don't want even numbers. So instead of adding 11, what we will do is we will add 22. Now 99 plus 22 is 121, which is a square of 11 as it is, we know. So this is divisible. Now 121 plus 22. See, 121 plus 11 if you take, you get 132. That is even number. We have already rejected even numbers, no? We have eliminated them. So we have only odd numbers with us. So 121 is an odd number added with 22, which is an even number, next multiple of 11, second multiple of 11. What would you get? You will get a 143. So 143 also is divisible by 11, so it cannot be a prime number. So let us eliminate all those numbers which are divisible by 11. Now 143 plus 22, 165, we have already eliminated. Now 165 plus 22, 187. Let's take this out. 187 plus 22, that is beyond 200. So just leave that one. That we don't require. Okay. So move on. 11 we are done. Now let's find out for 7. Now do you know a number which is divisible by 7? भाई अभी तो बताया था 13 into 7 is 91.
correct? 7 into 13, 91. 7 into 14, 98. 7 into 15 or 15 into 7, 105. 105 we have removed, eliminated. So 105 plus 14, because if you add 7, again 105 odd plus 7 odd, odd plus odd, you will get even. Even numbers we have eliminated already. So we will not add 7, we will add the next multiple of 7, that is 14. So 105 plus 14 would be 119. So 119 is divisible by 7. See, 7 ones are 7, 11 minus 7 is 4, 4 and 9 is 49, 7 sevens are 49. Right? Now 119 plus 14, how much is that? It's again, what do we have here is 119 plus 14 is 133. Now this is divisible. See, 7 ones are 7, you have a 663 is what you have, 7 nines are 63. Plus 14, 133 plus 14, how much do we get? We get a 147. Arey, 7 twos are 14, 7 ones are 7. Not a prime number, no? Because it is divisible by 7. Plus 14, what do you get? A 161. 7 twos are 14, remainder 2, 2 and 1 is 21, 7 threes are 21. 7 twos are 14, 18 minus 14 is 4, 4 plus 9, 4 and 9 is 49, 7 sevens are 49. Now 189 plus 14 would be beyond 200, no? It will be 203. So forget about it. We want only till 200. Alright, so we are done with our checking whether a number is divisible by 7 or not. Now we are left with only one number. Which one is that? 3. Now what is the divisibility rule for 3? Well, if at all you have a number in front of you and that number, in that number, the sum of the digits is divisible by 3, then that number is said to be divisible by 3. Alright, by that what I mean here is 111, 1 plus 1. What is the total that you get here? You get it as 3. So as the total sum of digits here is 3 and 3 is divisible by 3. So 111 is divisible by 3. So hence it cannot be a prime number. Now what would you add to this 111? You will add 6 to it, second multiple. Well, 111 plus 3, what do you get? 114. Odd plus odd, even. 114 even number we have already eliminated. Right? So what would we add? Second multiple of 3. 3 का अगला multiple 6. तो 6 ऐड करो इसमें, कितना आ जाता है? 111 जमा 6. 117. Again 1 plus 7, 9. 9 तो divisible है ना 3 से. तो इसलिए this is out. Divisible. Okay. This means that this is our prime number. The leftover one. Okay. Next 1, 2, 3. 1 plus 2, 3 plus 3, 6. Again divisible by 3. 1 to 7, 1 plus 2. No. Here anyhow we were supposed to add, no? So 113 plus 6 was 119 plus 6 is 125. That we already have eliminated. Is it or not? Okay. Now not 125, sorry. 117 plus 6 we were supposed to take. Okay, that is 1, 2, 3. Now 1, 2, 3 plus 6, 1 to 9. See, 1 plus 2 plus 9, 12, divisible by 3. Now we got another prime number in 120s. That is 127. Okay, so 129 plus 6, 135. Already removed multiples of 5. Now here again, 135 plus 6, 141. 141, 1 plus 4 plus 1, you remember? 1 plus 4 plus 1, how much will that be? Well, that is going to be 6. Again divisible by 3. So we remove it. It's not a prime number. 149. No, it is not divisible. Why? Because 141 plus 6, 147. We have removed 147. Plus 6, that is 153. Remove it. Divisible by 3. Plus 6, 159. Remove it. Divisible by 3. Plus 6, 165. We have already eliminated. Plus 6, 171. Eliminate. Plus 6, 177. Eliminate. Plus 6, 183. Eliminate. Plus 6, 189. We have already eliminated. Over and out. Plus 6, 189 plus 6 is 195. We have already done away with it. So now we are left with prime numbers. See, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 11. This is 12. This is 13. This is 14. This we are eliminating because this is a multiple of 13. Okay. So this is what? 15. This is your 16. This is 17, 18, 19, 20, 21. So we have identified, found out the 21 prime numbers from 101 to 200. Out of which, I've already told you, first 4 and last 4, ये 4 और ये 4, ये 8 तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये तो बहुत आसान है. तो अब आप ये ध्यान रखें कि बाकी यहाँ पे देखो 30, you know how you can arrange 13 is a prime, so 113 is a prime. 17 is a prime, but don't take it. 27 somehow relate with 27, which is a cube, with 127. 37 is a prime. Okay, 31 is a prime, but 39 is not. So anyhow, in 30s, 130s, there are 3 prime numbers. Okay, so here 4, then you have 1, then you have 1, then you have 3, then you have 1, then you have 2, then you have 2, then you have 2, then you have 1, then you have 4. Something like that. Just get acquainted with them. It is only a matter of some practice, you know. जितना time spend करोगे numbers के साथ में, उतना ही इनसे और दोस्ती होती जाएगी और आपको याद रहेगा. Correct? Okay, so these are the prime numbers from 101 to 200. Now let's move ahead. I have a question for you. Please solve. Okay, how many integers are there from 0 to 5000, which are both square and cube? I think we have already got the answer for this, right? We already know these numbers. Now, first of all, अब आपको ये पता होना चाहिए, if a number is both square and cube, then the number should be written as x power 6. क्यों? Why? Because x power 6 can be written as x square whole cube, which can be rewritten as x cube whole square. See, this is a cube, this is a square. Okay. Now simple, I am going to just put in the values of x as 1, 2, 3, 4. बहुत आसान है. So x is equal to 1. So what do you get? 1 power 6. 1 power 6 we know is 1. You remember these numbers? I know you do. But how you should find them? X is equal to 2. Okay. So 2 power 6. 2 power 6 is what? 64. See, this is 1 square as well as 1 cube. This is 8 square as well as 4 cube. You remember? Okay. So x is equal to 3. What do you get here? 3 power 6. That is nothing but 729. Okay, that is nothing but 27 square and 9 cube. Correct? Now the fourth one here is this. 4 power 6. 4 power 6 we have already discussed. If you remember, it is 4096. So this is going to be 64 square and 16 cube. So how many integers are there from 0 to 5000 which are both square as well as cube? There are only 4. Which are those 4? 1, 64, 729 and 4096. This is an examination question. Okay. Now some more calculations which will be pertaining to percentages. Now I would be teaching you the fraction to percentage and percentage to fraction conversion in the next class, which would happen tomorrow.
when I'm going to take another session with you. Although your next class is going to be at 6:30, which would be intro for reasoning as well as directions. But the next session for speed maths is going to happen tomorrow, 8 to 9 p.m. Right? That is when we will be actually discussing about percentage to fraction conversion. But still, I want you guys to solve this question. How would you solve such kind of a question? 37.5% of 81624. Or let us say, if I give you another question, the one which I had written in the beginning, जो question मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा था वो? 28.56% of 7,000, let us say 71,421. ये कितना है? मुश्किल हो जाएगी ना अब आप you must be thinking that you have to directly multiply. Obviously not. There is a trick, there is a shortcut. Nothing. You should know the fraction equivalent for the percentage values, which we are going to learn tomorrow, right? So 37.5%, अगर आपको पता होता, if you would have known कि 37.5% is equivalent to 3/8 as a fraction, तो अब देखिए question कितना आसान हो गया. It becomes 3/8 into 81624. 8 ones are 8, all right? Again 1, I count. Divide this, so 0. 16, so 8 twos are 16. Again 2, so 0. 24, 8 threes are 24. Now what do you have to do? 3 into 10203. Okay, which you know is nothing but 30609. So you want to do it like this, or you want to multiply 81624 into 37.5 followed by a line? Doesn't make sense. That is when you say paper was tough. No, the process that you adopted, the method that you adopted was tough. All right, so you've got to upgrade your skills here. Now similarly, 28.56%. You know, had you known basically that this is equivalent to 2/7, 28.56%. Do you know that? Exactly, it is equal to 2/7. So what we have here is 2/7 of 71421. So what do you get here is 7 ones are 7, 0 2s are 14, 0 3s are 21. So what you have to do is multiply 2 with 10203, wherein you get 20406 as your answer. That's that. All right. So that is very important for you, that you know the percentage equivalents of fraction and fraction equivalents of percentage. All right. I don't know whether I've introduced myself or not. My name is Kapil Datta. I have been into the coaching industry, teaching aptitude and reasoning and maths since last 22 years for various organizations. Now I am working with Byju's. All right, and I would be conducting your sessions, reasoning as well as quantitative ability. I would be taking the classes for you guys, right? तो चलिए फिर, और अगर आपके पास में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. If you have any doubts, any question, I'll give you a minute if at all you want to post something. All right, guys, so our next session is scheduled at 6:30 p.m. From 6:30 to 8:30. I would be starting with the first session of reasoning, wherein I will introduce the topics as well as I would also, give you certain basic concepts of, let us say, directions. We will start with that, okay? So kindly be there, 6:30 to 8:30, free session. If you like it, enjoy it, learn, and progress in life. Simple as that. With that, I, Kapil Datta, sign off, take your leave, and we will meet again at 6:30. Thank you so much.